hope you all are doing great. Welcome to EduBridge IAS in News. Today we will be discussing another important topic, that is the Israel's Iron Dome. Israel's Iron Dome. You must have heard about the ongoing issue in Palestine and Israel. And in this, the Iron Dome is discussed so many times in news. So today we'll discuss what is Israel's Iron Dome, from which topic it is, from the point of view of which topic it is important. It is important from the point of view of international relations. It is important from the point of view of defense and internal security. Okay, it is important from these point of view. अगर आपने अभी तक EduBridge IAS को सब्सक्राइब नहीं किया है, please subscribe to our channel. Also click on the bell icon so that you get notified with our videos regularly. So start करते हैं. What is Israel's Iron Dome? If you can look at this video, there are certain lightnings, there are certain images which show that something is happening in the sky, and this is what is all about the working of the Iron Dome. ठीक है, तो Iron Dome is a missile defense system that is deployed by Israel. Iron Dome is a missile defense system that is deployed by Israel. क्या है ये? It is a short range. ठीक है, बहुत long range नहीं होता है. It is a short range ground to air, यानी कि एयर जो डोबी डिफेंस होगा वो एयर टू एयर नहीं होगा. कोई भी मिसाइल है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां से एक मिसाइल है, तो ग्राउंड से एयर में इसको डिस्ट्रॉय करेगा. ठीक है, इट इज अ ग्राउंड टू एयर. दैट इंक्लूड्स अ रडार. That includes the Tamir interceptor missiles that will neutralize the rockets or missiles that are coming towards the Israel. ठीक है, so Iron Dome is part of Israel defense system. ठीक है, Israel defense system. Now Israel में जो conflict है, अगर आप बहुत ध्यान से इस मैप को देखें तो the conflict is between the two regions, that is the Israel and the Palestine. Palestine is distributed among two geographical areas. One is the West Bank. ठीक है, comment section में बताइएगा that this West Bank is on the bank of which river? This is a UPSC previous year question. तो West Bank and the Gaza Strip. This is called as the Gaza Strip. The ongoing conflict is in Gaza. Ongoing conflict is in Gaza. तो UPSC में मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट डज इजराइल हैज अ कोस्ट इन मेडिटेरेनियन सी. तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, सो जो आयरन डोम है इट कैन बी यूज टू काउंटर सी रैम. इट कैन बी यूज टू काउंटर सी रैम, मतलब काउंटरिंग रॉकेट्स, आर्टिलरी एंड मोर्टार्स. ठीक है, एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो counter aircraft, helicopters and UAV, unmanned aerial vehicles. The success rate is good. It's very good. That is 90%. So if 10 missiles or 10 rockets are fired towards Israel, it is the capacity to destroy the maximum of 9 missiles. So it is having a very good efficiency. Now Iron Dome works upon three main systems. क्या किस सिस्टम से काम करता है? That can be very clear from this image. तो यहां से एनिमी ने एक रॉकेट फाइंड किया. तो पहला सिस्टम जो इसमें यूज होता है, दैट इज द फर्स्ट सिस्टम दैट इज यूज्ड इज द रडार सिस्टम. फर्स्ट सिस्टम इज यूज्ड इज द रडार सिस्टम. यहां से कोई एनिमी ने रॉकेट फायर किया, वो जो रॉकेट फायर होगा रडार आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ कोई ऐसा रॉकेट फायर हुआ है. फिर यहाँ पर एक कंट्रोल सिस्टम होता है. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जिसको हम बोलते हैं BMC, बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम. बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम, सो इट इज कॉल्ड एज BMC. ये BMC कंट्रोल से आइडेंटिफाई करेगा कि वेयर विल बी द इंपैक्ट पॉइंट. देन देयर विल बी अ लॉन्चर मिसाइल सिस्टम. तो यहां से एक मिसाइल लॉन्च होगा इन काउंटरिंग टू दिस रॉकेट एंड इट विल डिस्ट्रॉय इट इन मिड एयर. तो आपने अभी जो एक वीडियो देखी थी उसमें जो आतिशबाजी हो रही थी, दैट वाज द डिस्ट्रॉइंग ऑफ अ मिसाइल थ्रू द आयरन डोम सिस्टम. ओके, नाउ
जो इंटरसेप्टर मिसाइल है दैट इज यूजिंग द तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल्स, द तामिर इंटरसेप्टर मिसाइल। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कॉस्ट है $80,000, ठीक है। वन इंटरसेप्टर मिसाइल इज कॉस्टिंग $80,000। इट मींस व्हेनेवर अ मिसाइल इज डिस्ट्रॉयड इन एयर, इजराइल इज स्पेंडिंग $1,60,000, okay, and the cost of complete Iron Dome is $50 million. The cost is $50 million। एंड जो रॉकेट है, जो इजराइल की तरफ फायर हो रहे हैं, दे आर कॉस्टिंग अप्रोक्सीमेटली $1,000। सो यानी कि इट इज वेरी कॉस्टली फॉर इजराइल, इट इज वेरी कॉस्टली फॉर इजराइल, ओके। एंड the rockets that are being launched, it is not costing much to the adversary of Israel, okay। Now the question you may have in your mind ki why it is important for us. It is important for us because India is also planning to purchase, or India has almost completed the process of buying the S-400 air defense system from Russia. So India is purchasing S-400 air defense system from Russia for approximately $5 billion, which will also act as a missile defense system for India, including the defense from rockets, missiles, and cruise missiles. The difference is that the Iron Dome is short range, however, the S-400 is longer. Okay, it is having a longer range. Now, the range can be approximately for 300 to 400 kilometer. Okay, अब इंडिया कौन से मिसाइल्स यूज करेंगे? तो इंडिया विल बी यूजिंग आकाश, short range surface to air missiles, okay। At the same time it will have new missile that is called as Pechora, okay, new missile that is called as Pechora. At the same time, India is also purchasing National Advanced Surface to Air Missile System 2 from USA. So India is having two systems to protect the capital, that is the New Delhi. India is trying to have the purchase it for the protection of capital New Delhi, okay। अब दिल्ली में जो है मल्टी लेयर्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का है। मल्टी लेयर्ड क्या होगा? एक तो आउटर मोस्ट लेयर होगी, then there will be S-400 layer, then there will be third layer of Barak 8, ठीक है, there will be third layer of Barak 8, then there will be fourth layer of Akash, and there will be fifth layer of the National Air Advanced System. So there will be 5-layer protection for India. इसीलिए हमारे लिए important हो जाता है topic for the UPSC examination, okay। Now the question may be that the THAAD, Thermal High Altitude Air Defense System, sometime in news, it is an Israeli radar system, India's indigenous anti-missile program, an anti-American missile system, a defense collaboration between Japan and South Korea. Please try to answer this question in the comment section below. And if you like our videos, do press the like button, and for daily quiz and current affairs, subscribe to our Telegram channel. The description will have the link to that Telegram channel. So please do take good care of yourself, and tomorrow we'll bring another important topic in the EduBridge in News section. Thank you very much.